Dear students, in this topic we will discuss about refractive index. Refractive index of any medium that can be explained with respect to air or vacuum, or that can be explained with respect to any other medium other than air or vacuum also. I repeat, इसको दो तरीके से explain कर सकते हैं. You can explain it in terms of air or vacuum, so not in terms of with respect to air or vacuum, or you can explain it with respect to any other medium other than air or vacuum also. So once we explain the refractive index of any medium with respect to air or vacuum, that is simply known as refractive index of that medium or absolute refractive index of that medium. And once we explain the refractive index of any medium with respect to a medium other than air or vacuum, then it is known as relative refractive index. ओके, सो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सो सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम. सो इधर आप देख सकते हैं light ray is coming from air with this, and it was traveling at a speed of small letter c meter per second. इंटरफेस में स्ट्राइक किया, उसके बाद it is bending towards the normal because it is traveling towards an optically denser medium, and that medium is glass. इधर इसका स्पीड है small letter v meter per second. You can see that the light got bent towards the normal. Okay, so I repeat, here we are going to explain the refractive index of medium with respect to air or vacuum. So in my first part, this explanation I am going to do in two parts. So in my first part, I am going to explain it in terms of speed of light. Okay, it in terms of speed of light. All right, now in terms of speed of light, how we define the refractive index of the given medium. Okay, here the medium is glass, so how we define it is defined as the ratio of speed of light in the medium to speed of light in air. Sorry, the ratio of light of speed of light in air upon speed of light in the medium. So refractive index is the ratio of speed of light in air to speed of light in the given medium. इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग म्यू. ओके, फाइन रिप्रेजेंटेशन म्यू का टर्म्स में होता है, एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेज दैट म्यू इक्वल्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. ओके, सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैंने c मेंशन किया हुआ था. ओके, और इधर मीडियम में से इट इज v मीटर पर सेकेंड. ओके, इस एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी पहले देख चुका है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन medium, that was sin A upon sin R. Okay, so here that particular constant, you might be remembering that I told you the second law of refraction, sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction, that is equal to a constant. And here I am explaining what is that constant. That constant is nothing, it is the refractive index of the given medium. So I explain once again, refractive index of a given medium means it is nothing, the speed of light in air upon speed of light in your given medium. Okay, so either like example, as I told in the diagram, I consider the medium as glass. So you can see that either mathematical expression मैंने लिखा हुआ है, refractive index of glass means speed of light in air upon speed of light in glass. Okay, now my second method. Again, I am going to explain the refractive index of a medium with respect to air only, but here instead of speed of light, I am going to explain in terms of wavelength. Okay, we all know that if we consider a wave motion, wavelength equals to speed of wave into time period होता है. Okay, time period को हम normally capital T से represent किया जाता है. Time period and frequency के बीच में जो relationship है, okay, we know that time period T equal to 1 upon nu होता है. ओके, सो इधर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मैंने 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख दिया. ऑलराइट, सो इस फ्रॉम हियर आई कैन से दैट स्पीड ऑफ द वेव, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इनटू
फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे, इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, सो इस पर्टिकुलर पार्ट को यानी कि इस रिलेशन को हम ऊपर वाला एक्सप्रेशन में डाल देंगे। कौन सी में? इन टर्म्स ऑफ स्पीड वाला जो एक्सप्रेशन था ना, व्हाट वाज दैट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu is equal to speed of light in air upon speed of light in the given medium। सो ये जो स्पीड का जो टर्म है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, सो पुट करते वक्त स्पीड का टर्म चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? स्पीड विल बी चेंज्ड इनटू वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। सो आप देखिए, this is wavelength in air multiplied by frequency in air upon wavelength in medium upon frequency in medium। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एक वेव का फ्रीक्वेंसी मीडियम के विद रेस्पेक्ट टू चेंज नहीं होते। इट नेवर चेंज विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बोले तो इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द सोर्स ऑफ लाइट। सो वो कभी भी मीडियम के विद रेस्पेक्ट टू कभी चेंज नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। सो कैंसिल होने के बाद हमारा एक्सप्रेशन में क्या बच जाएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम म्यू इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। सो दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन mu suffix medium, यानी कि absolute refractive index of any medium, that is wavelength of the a given light in air or vacuum upon wavelength of light in the given medium. It has to be the same light. All right, so that was all about absolute refractive index। so absolute refractive index को हमने speed of light का term में भी explain किया, हमने उसका wavelength का term में भी explain किया। I believe आपको समझ में आए होंगे। ओके, अब हम अपने लास्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं, दैट इज relative refractive index। okay, so as I told in the beginning, relative refractive index means we are explaining the refractive index of a medium with respect to other medium other than air or vacuum। so here you can see two different transparent medium 1 and medium 2। medium 1 में light आ रहे थे, ओके, विद स्पीड ऑफ v1 एंड वेवलेंथ लैम्डा 1 है, और वो मीडियम 2 की तरफ गया। डायग्राम सेज कि मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ मीडियम 1। सो मीडियम 2 में एंटर किया एंड इट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, and in medium 2 it was traveling with the speed of v2 and the wavelength was lambda 2। okay, so here as I told, light is traveling from medium 1 to medium 2। now the relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1, I repeat, relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1, इसको हम लिखते हैं ऐसे, medium relative refractive index of 2 with respect to 1, हम इसको ऐसे लिखते हैं। okay, so relative refractive index of medium 2 with respect to 1 हम कैसे explain करेंगे? it is explained as speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2। I repeat, refractive index of medium 2 with respect to 1 equal to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, and that is equal to lambda 1 upon lambda 2। so this is expression for relative refractive index। okay, so हमारा ये v1 upon v2 क्या होगा? it is sin i upon sin i upon sin r। so फाइनल एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? mu21, okay, that equals to sin i upon sin r equals lambda 1 upon lambda 2। is that clear? all right, okay, so mathematical expression you can see once again, it is mu2 upon mu1, mu2 1, that is refractive index of 2 with respect to 1 equal to speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2, and that is sin i upon sin r। okay, now I would like to discuss some important points associated to refractive index। first thing is, चाहे वो absolute refractive index हो चाहे वो relative refractive index हो, okay, after all it's ratio of speeds only। okay, speed in medium 1 upon speed in medium 2। just because of that, this particular physical quantity, that is relative refractive index or absolute refractive index, it is a dimensionless as well as unitless physical quantity। okay, second thing is that, okay, it depends upon few
factors. Out of that, first one is the nature of the medium. Okay, medium 1 as well as medium 2 दोनों मीडियम का नेचर में डिपेंड करेंगे. सेकंड थिंग इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप रेड लाइट यूज करोगे, जो आपका sin A अपॉन sin R जो वैल्यू है वो वायलेट में कुछ और वैल्यू होगा. Okay, so this ratio, that is the refractive index of 2 with respect to 1 or absolute refractive index, both these values do depend upon the wavelength of the light what you are using. Okay, fine. Next one is the temperature of the medium. Okay, temperature of the medium, because medium का जब temperature change होगा optical density में difference आएंगे, that is fine. And of course the last one, nature of the surrounding medium. So these are the four factors that can alter the refractive index of a given medium.